हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोलो इंग्लिश बिंदास विद अतुल सर चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम लोग रीडिंग क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से और एक नए तरीके से आपको रीडिंग क्लासेस का पूरा आपको कोर्स देने वाले हैं हम लोग। वन बाय वन चैप्टर वाइज चलेंगी क्लासेस। आज क्लास 1 है हमारा, आज डे 1 है। चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये आपके सामने 35 वर्ड्स हैं। क्या आप इनको रीड कर सकते हैं? अगर आप इनमें से 10 वर्ड्स भी रीड नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्लास आपके ही लिए है। तो रीडिंग क्लासेस को बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरा फॉलो कीजिए। जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे उनको फॉलो कीजिए। बेशक आप ये 35 वर्ड्स ही नहीं, बहुत सारे वर्ड्स आगे की क्लासेस में सीख पाएंगे। तो आज हमारा टारगेट है इन 35 वर्ड्स को सीखने का। चलिए देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इनको सीखेंगे। ये सारे हार्ड वर्ड्स हैं, राइट? आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। पहला स्टेप होगा कि हम फुल स्टोरी, एक मैं स्टोरी शेयर करूंगी आपके साथ और ये फुल स्टोरी हम लोग पहले रीड करेंगे। रीड फुल स्टोरी। सेकेंड स्टेप में मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दूंगी वो वर्ड्स का दूंगी। जो 35 वर्ड्स है उनको एक बार और डिस्टिंग्विश करके उनको एक्सप्लेन करूंगी आपके साथ। और स्टेप 3 में हम लोग टिप्स शेयर करेंगे आपके साथ कि क्या अच्छे टिप्स हो सकते हैं रीडिंग करने के लिए। तो अगर आपको भी रीडिंग मास्टर बनना है, अच्छे से रीडिंग करना सीखना है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग। पार्ट 1। ये पहले मैं सारे वर्ड्स को रीड आउट करूंगी आपके सामने। जहां आपको ऐसा लगता है कि कोई वर्ड पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप भी एक बार रीड कीजिएगा। देखिए, सुनना बहुत जरूरी है। रीडिंग करते टाइम हमें सुनना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से उस वर्ड को बोला जा रहा है। तो अगर आपको वर्ड को बोलना आ जाएगा तो आप उसे बहुत जल्दी से रीड भी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Rati and Janu had just moved to a new place. Rati wanted to make new friends right away, but her little brother was very shy. Every day, father went to work. Rati stayed with Janu so he would not get bored. Janu saw someone eating an ice cream bar. Sis, I want ice cream, said Janu. How much is it? Rati asked as she searched her pocket for money. When she didn't find any, Rati tried to distract her brother. Janu, let's go for a walk. What is that nice smell here? She asked the boy in red. What flowers are these? Why are you drying them? The boy replied, Frangipani flowers. We sell them to the incense factory. Look, Janu gestured to the convenience store. He did not want to talk to those children drying flowers for too long. They sell ice cream. Oh, the ice cream is too expensive, Rati said. She did not like disappointing Janu. Janu, what is going on over there? Rati exclaimed, pointing to a long line of people. The boy in red was in that line too. Rati was curious and wanted to check it out. Janu remained silent, still disappointed. But finally, he nodded and dragged his feet as they walked over. Oh, it is the incense factory, where people sell flowers, Rati said. Some people coming from the cemetery were bringing frangipani flowers too. Rati had a plan. Janu,
Let's collect frangipani flowers. We will buy ice cream later, okay? At the cemetery, Janu didn't like the sound of that. He followed Rati reluctantly. Crack, crack, crack. Sis, what is that sound? Janu asked. Oh, it's just the sound of bamboo. Srack, srack, srack. Sis, I'm scared. Janu shouted. Many people were collecting the flowers which were growing between the headstones. When Rati and Janu arrived, those people looked upset to see them. Janu felt the situation getting tense. Janu, let's go somewhere else. Rati held his hand. It turned out that the flowers grew outside the cemetery as well. There were frangipani trees on the side of the road and near a field. It turned out that they grew outside the cemetery as well. After picking for some time, Rati sat cheerfully 2 bags of frangipani on the first day. Janu laughed while wiping away sweat. They rushed home since it was getting late. The flowers they collected must be dried immediately. Dry quickly, frangipani flowers. Wow, are you drying flowers too? Father asked. Yes, I want to buy ice cream, Janu replied happily. Whoosh! The wind blew hard, taking the frangipani flowers with it. No, our flowers fell into the river. Everything is gone. Janu cried loudly in shock. The next morning, Rati and Janu went to look for flowers again. They ran to the field. Hooray! We got a lot today, Janu exclaimed later, doing a little dance. Janu sang as he spread out the frangipani flowers. Too bad, the mat is too small. Rati said, some of the flowers can be stored and dried later. When they were done, Janu yawned. Soon he was fast asleep. Rati was also sleepy. She wanted to rest too. Suddenly, Rati awoke with a start. Janu screamed loudly, it's raining. Oh no, we slept too long, Rati exclaimed. Janu sat down, covering his face. The frangipani flowers were all wet. There are still some flowers left. Don't be sad, Janu, Rati said, hugging her brother. She wiped away her own tears when he wasn't looking. When it stopped raining, Rati and Janu spread out the rest of the flowers on the mat. They did not want the flowers to get caught in any more rain. For a few days, they looked after the frangipani flowers. The flowers turned brown and became shriveled and wrinkled. It was time to go to the incense factory. The keeper weighed the flowers. Janu asked Rati, how much money did we get? Rati said nothing. She took Janu to the convenience store. Finally, they could buy an ice cream bar. Why only one? Janu asked. We don't have enough money, Rati said. This is for you, Janu. Yum yum. Janu enjoyed the ice cream so much. Rati wanted to try it too, but she did not want to ask. Perhaps next time they would be able to buy too.
Do you want ice cream too? Says Janu offered. Let's eat this together. Delicious. Okay, now it's your turn. Guys, आप सभी ने इस स्टोरी को अच्छे से सुना. आई थिंक वर्ड बाय वर्ड आपने सुना है. तो इसी तरीके से अब आपको भी पढ़ना है. तो पढ़ने के लिए कुछ मैं इंस्ट्रक्शंस आपको बताऊंगी. आपकी बारी है, वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा. अब इस बार वीडियो को म्यूट करके आपको खुद से रीड आउट करना है. जहां आपको लगे कि मैं वो वर्ड नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो उसको वीडियो को अनम्यूट कीजिएगा और उस वर्ड को सुनिएगा और उसके बाद फिर से उसको रीड आउट कीजिएगा. तो अब आपको करना क्या है, देखते हैं कुछ हार्ड वर्ड्स. इनको पहले पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, उसके बाद रीड आउट करना शुरू करेंगे. चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये जो फर्स्ट वर्ड है इसको हम कैसे पढ़ेंगे. ठीक है. सर्च्ड, सर्च्ड. डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट. फ्रेंजीपानी. फ्रेंजीपानी एक फ्लावर का नेम है, वाइट कलर का फ्लावर होता है. अगर आपको ये वर्ड्स को अगर सपोज दैट कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो कि आपके लिए न्यू है तो आप सीधा गूगल पर जाकर इसको राइट डाउन कीजिए और उसको साउंड्स के थ्रू सुनिए. तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर पता लगेगा कि हम उसको कैसे पढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज इंसेंस. इंसेंस. जेस्चर्ड, जेस्चर्ड. फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो जी के साथ ई का साउंड होता है तब हम उसको जा पढ़ते हैं. अगर जी के साथ ई, आई एंड वाई का साउंड होता है तो हम उसको जा पढ़ते हैं. एंड जी के साथ ओ या ए का साउंड होता है तो हम उसको ग पढ़ते हैं, या सिंगल जी हो तो भी हम उसको ग पढ़ते हैं. तो दिस वर्ड इज जेस्चर्ड. कन्वीनियंस, कन्वीनियंस. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव. मेरे साथ साथ बोलिएगा, एक बार सुनिएगा. जैसे मैंने एक वर्ड को पढ़ा एक्सपेंसिव, मैंने उसको रिपीट किया तो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा. तो आपको ये 35 वर्ड्स बहुत इजीली आपको समझ आ जाएंगे. एंड देन आप अपनी पूरी स्टोरी को शुरुआत से रीड कीजिएगा. डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग. एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड. Curious, curious. Nodded, nodded. Dragged, dragged. Cemetery, cemetery. Reluctantly, reluctantly. Situation, situation. Cheerfully, cheerfully. Wiping, wiping. Sweat, sweat. Rushed, rushed. Immediately, immediately. Replied, replied. Blue, blue. Shock, shock. Yawned, yawned. Awoke, awoke. Screamed, screamed. Slapped, slapped. Hugging, hugging. Caught, caught. Shriveled, shriveled. Wait, wait. Convenience, convenience. Enough, enough. Perhaps, perhaps. Delicious, delicious. So, आप लोगों ने देखा कि हम इन सारे वर्ड्स को किस तरीके से पढ़ते हैं. करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस के साथ आप इस पूरी एक्सरसाइज को एक बार रीड कीजिएगा. और आज के जो मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी, टिप्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारे वर्ड्स को आप नोट डाउन कीजिएगा अपनी नोटबुक में और इसको 2-3 टाइम्स एटलीस्ट रीड कीजिएगा. और जो स्टोरी आज हमने आपसे शेयर की है उस स्टोरी को 2 बार कम से कम आपको रीड करना है. रीड ट्वाइस एंड राइट न्यू एंड हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक. नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिएगा और जब तक इन वर्ड्स को ही प्रैक्टिस कीजिएगा. अगर आप इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आपको वो वर्ड्स जल्दी से याद भी हो जाएंगे और वो स्पेलिंग्स भी आपको प्रॉपरली समझ आएंगी. इसके अलावा
आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में आप बताइएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं रीडिंग से रिलेटेड तो आप वो शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।